describe the open spheres of unit radius about the point 0, 0 for each of the metrics for R square. So metrics जो हैं that are defined like this: d of d1 of x comma y is mod of x1 minus x2 plus mod of y1 minus y2, where your x is x1 y1, y is x2 y2, and with the metric d2, where metric d2 is defined like this: it's a max of mod of x1 minus x2 comma mod of y1 minus y2, right? So here the metrics, these are d1 and d2 for the space R square. You have to find out the open sphere of unit radius centered at 0, 0. Find out this. It is denoted by the symbol S. The radius is unit. The point is 0, 0. This is the point. It is a set of all those xy belonging to R square such that the distance d1 of x comma y, the distance of x1, let's call this as z. So we can write over here z comma 0. This distance is less than 1. So we have to find out those points in R square which satisfying this condition. In D1, your D1 is defined like this. So what will be this? It is a collection of all those z in R square such that your z is x comma y. Your 0 is 0, 0. So you have to put 0 over here, 0 over here. And so you will get mod of x plus mod of y is less than 1. Now tell me what type of open sphere you will get in case of R square with respect to this metric. क्या आ रहा है ये आपके पास? You have to consider all those points which are lying inside this. You can say x plus y is equal to 1, x minus y is equal to 1, minus x plus y is equal to 1, minus x minus y is equal to 1, right? तो ये आपके पास rhombus बनेगा. So all the points which lying inside these lines. So this is an open sphere with radius unit and center at the point 0, 0 with respect to the metric D1. Is this point clear? So after simplifying, we have to find out all those x and y such that which satisfying this condition, that mod of x plus mod of y is less than 1. Right? So if you consider x to be positive, y to be positive, you have to find all those points which are x plus y strictly less than 1. Okay? All those points, if your y is negative, x minus y is strictly less than 1. X negative, y positive, this less than 1. Minus x minus y, this less than 1. Right? तो ये आपके पास अगर equal to लोगे, that will become the boundaries. So all the point which lying inside these boundary,
that will become an open sphere of unit radius about the center 0. Is it clear? Try to find with respect to d2. d2xy is defined like this. It is the max of mod of x1 minus x2 comma mod of y1 minus y2, where x जो है that is x1 comma y1 and y is x2 comma y2. So the open sphere with unit 1 about the center 0 0 with respect to the metric d2, it will be those point of the domain such that the distance of z and null, it is less than 1. Such that the max of mod of x1 minus 0 comma mod of x1 आपका x ही है, mod of y minus 0. So this maximum number, it should be strictly less than 1. So आपका mod of x भी less than 1 होना चाहिए, basically mod of y भी less than 1 होना चाहिए. अगर maximum number ही इन दोनों से छोटा है तो it means ये दोनों ही छोटे होंगे. Okay, so कौन से बन गए आपके पास points? एक सर्कल बनेगा मैम क्या, मतलब कि रेडियस 1 का और उसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे लाई करेंगे? नहीं, एक स्क्वायर बनेगा. ये 0 0 सेंटर है, x इज इक्वल टू 1 बाउंड्री बनी एक तो, ओके, y इज इक्वल टू 1 बाउंड्री बनी, x इज इक्वल टू -1 बाउंड्री बनी, y इज इक्वल टू -1 बाउंड्री बनी. ये सारी बाउंड्रीज बन गई, but we need those points which are strictly less than it, so the points lying inside this boundary, this one, not a circle. ये सर्कल कब होता, अगर इस टाइप का आपके पास कंडीशन होती. दिस शुड बी लेस देन 1 अगर d आपका इस टाइप से डिफाइंड है. Yes, not it, ma'am. हाँ, here the condition is the maximum of both these numbers should be strictly less than 1, right? It means the numbers or also should be less than 1. अगर maximum number ही आपका strictly less than 1 है तो वो सारे नंबर जो 1 से छोटे हैं और you can say -1 और +1 के बीच में लाई कर रहे हैं, and this is true for x also and y also. So you get a square, all the point which lying inside this, that will become the open sphere with center 0 0 and radius unit, radius 1. Okay, is it clear? क्लोज स्फीयर क्या बन जाएगा फिर? पॉइंट्स जो लाइन पे हैं वो भी लाई करेंगे. Yes, so it will be less than equal to 1 means the boundary is also included. So all those points which are lying inside this square as well as the points lying on the boundary also, right? So that will become the closed sphere, right, with radius 1 and the point center 0 0. What is the neighborhood of a point? If there exists a open sphere which is contained in neighborhood for some radius greater than 0, then yes, it will be a neighborhood. So for this, first of all, we require a metric space, right? Now we consider any point from the set X. अब इस A point के around हम neighborhood कह रहे हैं N. N is said to be the neighborhood of A. If you can find out an open sphere with some radius R where R is greater than 0 and center A such that this is completely contained in N, then this N is said to be the neighborhood of A. So if this exists, which is completely contained in N, then your N will become the neighborhood of A. Now, what do you mean by an open set? Same जो हमने पहले किया है, but metric space में अब हम बात करेंगे. A subset G of a metric space XD
is said to be open in X with respect to the metric D, जो भी metric हमें given है उसके with respect to the metric D, if G is the neighborhood of each of its point. Right? So if your G is the neighborhood of each of its point, means every point इसका interior point ही होगा, then you can call this subset of a metric space to as an open set in X. तो ये जो open set है with respect to the whole set होगा. तो जरूरी नहीं कि this is always an open interval. It might be singleton set, it might be semi close, semi open. That depends on X. That depends on metric D. However metric is defined on any set X, it depends on that. If it will become the neighborhood of each of its point, then this is the open set in a metric in a space X. Is it clear? Definition is clear. Now just see with the help of examples. Always your empty set and the entire set, entire space, or you can say whole set, right? With any metric, they are always open sets. Empty set and the whole set, they are always open sets. Every open sphere is an open set. Every open sphere is an open set. क्योंकि open sphere जो है that is always contained in itself. तो एक ओपन स्फीयर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर itself contain होता हुआ around the point A, right? So it is true for any arbitrary point of this set, this open sphere. So we always have an open sphere in this set. So this will become the neighborhood of A. And since A is any arbitrary element of this open sphere, so it is true for every point. So that's why every open sphere is an open set. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now just see with one more example, or you can say you can show this. You can try to write this as a problem. Show that every set in a discrete metric space is open. Discrete metric space में हर subset, हर set जो है उसका वो always open होगा. Show that every set in a discrete metric space this is open. Let's suppose हमने metric space को XD से कहा है. Discrete metric space कौन सा होता है? Where the metric is defined like this. It is 0 when the points are same. It is 1 when the points are not same. So what we want to show that every set in a discrete metric space is open. Means कोई भी set pick करो आप तो that will become the neighborhood of each of its point. होना चाहिए वो. So let's suppose G हमने कोई सबसेट लिया है X का. दो आपके पास केस बनेंगे, either G empty होगा और G non empty होगा. Now if your G is empty, then clearly it is an open set, because we know that empty set is always an open set. So we suppose that G is non-empty. So we have taken G to be non-empty subset of X. And now we consider any element of G. Any arbitrary element हमने pick किया G में से. Now we need to find an open sphere around X which is completely contained in G. Can anybody tell me that what will be the open sphere around X?
which is always contained in G? What are the open sphere in case of discrete metric space? Singleton A and O. Yes, it is singleton and either singleton or the whole set. दो ही possibilities हैं. If your R is lying between. Okay, so whatever the point, this singleton is always an open sphere. ये तो always open sphere होगा ही होगा. So हमें अगर एक भी open sphere मिल जाता है which is completely contained in the set G, then that G will become the neighborhood of that point, right? Now, in case in discrete metric space, we know that singleton X is an open sphere for point X. Also, ये जो singleton set है, it is contained in G. Why it is contained in G? Because X हमने already member लिया G का. तो इसका मतलब ये इसके अंदर आएगा ही आएगा एलिमेंट. So you get an open sphere which contains the element and it is completely contained in G. So this implies G is the neighborhood of X. But X हमने arbitrary element pick किया था G से. So that means it is true for every element of G. Can I move to the next slide? Have you noted down? Yes, ma'am. All of you? Can I move? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So further what we write? We will write that since X is arbitrary, that is G is neighborhood of each of its point. So this implies G is an open set. और G भी हमने arbitrary कोई set pick किया है X में से. So इसका मतलब कोई भी आप इसका सबसेट लो या कोई भी इसमें सेट लो, they all are always open. Okay? हमने कोई प्रिसाइज तो किया नहीं, G यही वाला है. We take any non-empty subset of X and we proved that this is an open set. So it means it is true for every open set in X. So this implies that every set in discrete metric space is open. Clear to everyone? You observe discrete metric space में सिंगलटन सेट भी आपका क्या है? ओपन. However, अगर आप यूजुअल मेट्रिक लेते, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में सिंगलटन एक्स इज नॉट एन ओपन सेट. सो इट मींस ओपन जो है दैट डिपेंड्स कि आपका डी किस टाइप का है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ सेट ऑल्सो एंड इट डिपेंड्स ऑन द मेट्रिक. मेट्रिक कैसी आपकी डिफाइंड है. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपके जो सेट्स हैं वो चेंज होते जाएंगे. This is not necessary that open set is always in the form of open intervals or any set with open boundaries. The boundaries may be closed, right? Even a singleton set may be an open set. That depends on the metric. Metric आपकी कैसी defined थी. So discrete metric के space के case में singleton भी आपका एक open set है. Because it is the neighborhood of each of its point. एक ही point है इसमें
और यही ओपन स्फीयर भी है, so it is contained in it. So therefore this is an open set. However, in case of usual metric, it is not an open set. Clear है सबको? Now just see with more example. इसको check करो, check whether this is an open set or not. This is your space, whole space है ये, semi, right? D आपका usual metric है, it is mod of x minus y. A आपने कोई लिया set, this, is it open in x or not? Check. Check whether this set is an open in x. So ये स्पेस पे भी डिपेंड करता है और ये मीट्रिक पे भी डिपेंड करता है. अब इस केस में मीट्रिक आपकी यूजुअल है बट स्पेस इज नॉट एक्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? तो भी जरूरी नहीं है कि इंटरवल्स की फॉर्म में ही आपके पास ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में ओपन सेट आए. सो चेक वेदर दिस इज एन ओपन सेट और नॉट. क्या करना है इसके लिए आपको चेक? व्हाट डू यू वांट टू चेक ओवर हियर? ओपन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको चेक? That this set should be the neighborhood of each of its point. हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए इस सेट को. अगर ऐसा हो गया तो ये सेट क्या होगा? ओपन. इज दिस पॉइंट क्लियर? आइदर आपका x 0 है विच इज अ मेंबर ऑफ A, और x कोई नॉन जीरो एलिमेंट है द मेंबर ऑफ A. So we have to find an open sphere around this and around this, which is completely contained in A, such that A will become the neighborhood of each of its point. तो बेसिकली मैंने A को सिंगलटन 0 एंड ओपन इंटरवल 0 1 में ब्रेक किया है. इसके लिए नेबरहुड निकालनी है और इसके लिए नेबरहुड निकालनी है, इन सभी पॉइंट्स के लिए. नाउ अगर आपका x 0 है, देन व्हाट विल बी द ओपन स्फीयर अराउंड 0 विच इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन A? क्या आएगा? Can you find any one open sphere around 0 which is completely contained in A? Let's suppose we choose R to be half. Then what will be the open sphere around 0? बताओ क्या आएगी? This is those point of the domain such that the distance of x with 0 is less than half. D आपका किस तरह से डिफाइंड है? ऐसे put over here. So you get those point which lying between minus half and plus half. But आपका डोमेन क्या है? It starts from 0. तो ओपन स्फीयर क्या आएगा? It will be 0 to half. So you get an open sphere around 0 which is completely contained in A. मिल गई आपको एक ओपन स्फीयर. A आपके पास है, so you get an open sphere around the point 0 which is completely contained in the set A. This implies what? इससे क्या प्रूफ हुआ? is the neighborhood of 0. Yes, A is the neighborhood of 0. तो हमने 0 के लिए तो शो कर दिया कि A नेबरहुड है. अब नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए शो करना है कि क्या वो नेबरहुड है. अगर हो गया तो इट मींस A is the neighborhood of each of its point. So that means it is an open set. Okay. So now check, same way में check करो. X not equal to 0 के लिए can you find any open sphere which is completely contained in A? Next case क्या है? You take X to be non-zero and but member of A. A आपका है
सो अब आपको आर ऐसा चूज करना है सो दैट यू गेट एन ओपन स्फीयर अराउंड द पॉइंट एक्स वेयर एक्स इज अ नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट the distance of y comma x is less than r and this is mod of y. तो आपके पास ये आ गया y minus x is lying between minus r and plus r, so your y is lying between minus r plus x, r plus x. so ये आपको एक इंटरवल मिल गया x minus r से x plus r. अब अगर x आपका नॉन जीरो है तो देखो r किस टाइप का मैक्सिमम हो सकता है. r ऐसा होना चाहिए सो दैट कि ये कंप्लीटली लाई कर जाए आपका 0 1 ओपन इंटरवल में, मतलब 1 से वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए. तो देखो r पे क्या कंडीशन लगेगी, x प्लस आर आपका 1 से लेस हो, इसका मतलब r किससे लेस होना चाहिए, 1 माइनस एक्स से, राइट. r should be the minimum of 1 minus x और x minus r आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो 0 से, तो इसका मतलब r आपका लेस हो x से. ओके अगर ये चीज ट्रू होगी तो ये पूरा का पूरा इंटरवल आपका इसके अंदर लाई कर जाएगा. सो अवर r should be greater than 0. clearly it is greater than 0 because your x is non zero. अगर ये नॉन जीरो है तो क्लियरली 0 से बड़ा है, right. So you get the value of r which is the minimum of 1 minus x or x such that this open interval is completely lying in the interval 0 1. So you get an open sphere around any x of a, non-zero x of a, which is completely contained in a. So this implies that your a is the neighborhood of x and x हमने कोई arbitrary element pick किया है a set से other than 0. So it means it is true for every element of a. आप इवन चेक करके दे सकते हो, मान लो मैंने x को हाफ लिया, ठीक है, तो मुझे r क्या चूज करना है, आई हैव टू चूज r टू बी द मिनिमम ऑफ 1 माइनस हाफ कोमा हाफ. इन दोनों का मिनिमम क्या है, हाफ, राइट. सो आई हैव टू फाइंड आउट ओपन स्फीयर विद रेडियस हाफ अराउंड x. तो ये आपके पास किस टाइप का बनेगा, इट विल बी x माइनस आर कोमा एक्स प्लस आर. r आपका हाफ है तो x माइनस हाफ कोमा x प्लस हाफ. ओके तो x आपके पास क्या है, हाफ, पुट द वैल्यू ऑफ दिस ओपन इंटरवल 0 and here you are having 1. Clearly this is completely contained in this is a set, right. तो आप x कुछ भी चूज करो उसके अकॉर्डिंग आपको r मिल जाएगा such that you get an open sphere which is completely contained in a, right. It means it is true for every element of a other than 0. You can always find an open sphere which is completely contained in a. So that means your a set is neighborhood of each of its point. 0 के लिए हमने अलग से चेक कर लिया है, right? और नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए अलग से चेक कर लिया है. दोनों ही केसेस में ये नेबरहुड बन रहा है अपने हर पॉइंट के लिए. सो दिस इंप्लाइज दैट योर ए सेट इज ओपन इन R, open in X, right? So you can see that this set is neither open interval nor closed. Semi है, even then it is an open in X. So it depends on the space also कि आपने space क्या लिया है. इस space में जरूरी नहीं that always your open set is of the form open intervals. It might be semi open, semi closed, singleton, whatever. It depends on the metric as well as the space. Getting my point? Yes. इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है? मैम फॉर 0 हम्म
Can we take closed at 0? Means we got the interval minus half से 1/2. So when we need to find out the open sphere, so it should be open from 0 or नो नो, open आपका sphere डोमेन, open ही होना चाहिए. यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है ओपन स्फीयर का मतलब ओपन इंटरवल ही आए. दैट डिपेंड्स कि Okay. आपका स्पेस क्या है, दैट डिपेंड्स कि आपकी मीट्रिक क्या है. Okay. इस केस में ओपन स्फीयर आपका, क्योंकि डोमेन आपका ये है, तो आपके ये रेस्ट ऑफ द पॉइंट डिस्कार्ड हो जाएंगे. तो ओपन स्फीयर में ये वाले पॉइंट्स तो आएंगे नहीं, बिकॉज वी नीड दोस पॉइंट ऑफ एक्स विच satisfying this condition. So when you take the intersection of both, you will have just only this interval as an open sphere of the point 0 with radius half. Getting my point? We need to find those points from the x only. x में ही आपके 0 से स्टार्ट है, तो माइनस हाफ से 0 तक वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो कैपिटल एक्स के मेंबर ही नहीं है, वो हमारे होल सेट के मेंबर ही नहीं है, दे आर आउटसाइड. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, यही ma'am. यही मैं आपको बता रही हूँ कि ओपन स्फीयर, ओपन सेट, इसका मतलब ये नहीं है इन केस ऑफ मेट्रिक स्पेस दैट दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल्स. इट डिपेंड्स ऑन द मीट्रिक. मीट्रिक आपकी कैसे डिफाइन है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पेस. सेट पे डिफाइन करेगा, डिपेंड करेगा कि दैट किस टाइप का आएगा. देखो, अगर हमने सेट आर लिया था बट मीट्रिक डिस्क्रीट ली थी, उस केस में इवन सिंगलटन भी ओपन सेट आ रहा है, जबकि हमें पता है कि सिंगलटन इन केस ऑफ रियल लाइन ओनली अगर हम देखें तो वहां पर ये ओपन सेट नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एन ओपन इंटरवल अराउंड दिस विच इज कंप्लीटली कंटेन इन दिस सिंगलटन. यहां आकर डेफिनेशन चेंज हो गया. हमने ओपन इंटरवल नहीं कहा, हमने कहा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करना चाहिए. अब ओपन स्फीयर के लिए क्या है, ओपन स्फीयर जरूरी नहीं है कि वो आपका ऑलवेज ओपन इंटरवल हो, दैट मे बी एनीथिंग. उसमें कंडीशन है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन आर होना चाहिए, वो ओपन स्फीयर होगा. अब हमने देखा कि अगर मीट्रिक डिस्क्रीट है तो उस केस में ओपन स्फीयर या तो सिंगलटन है या होल सेट है. तो सिंगलटन सेट भी एक ओपन स्फीयर है. ओके, सो ओपन स्फीयर, सिंगलटन, क्लोज, सेमी क्लोज, कुछ भी बन सकता है. दैट डिपेंड्स कि आपका स्पेस कैसा है, दैट डिपेंड्स कि आपकी मीट्रिक कैसे डिफाइंड है. ओके, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट इज, ये भी आपने पहले कर रखा है उस सिंपल उसमें, दैट द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, right? But intersection need not be. So now we will prove this result that in a metric space, in any metric space x comma d, the union of arbitrary family of open set is again open. So now just see the proof. What we want to prove, we want to prove that the union of arbitrary union of the family of open set is also open. So first of all, we have to consider arbitrary family of open sets. So we have to consider a collection. So let G alpha, where alpha is any arbitrary element, let this be the collection of open set. राइट, ये सारी की सारी ओपन सेट्स हैं एक्स में. कंसीडर G to be as the union of G alpha. So we take the arbitrary union of all these collection of open set. Call this set as G.
Now what we want to prove, that G is an open set. After taking the arbitrary union of these open, it is again open, right? So what we want to show, that G is an open set. और open set के लिए हमें क्या show करना है? We consider any arbitrary element from this G and we require to show that G is a neighborhood of that point. So अगर वो किसी arbitrary point के लिए true हो रहा है, it means it is true for every point. So that in that case, G will become the neighborhood of each of its point. Right? Again, आपके पास दो possibilities हैं, या तो G empty set ही है because each collection is empty. Union लेने पे again empty, but clearly G is an open set. So now we will assume that G is non-empty. So suppose G is non-empty. If G is non-empty, we can always have any element in G. If it is non-empty, it means there always exists at least one element. So let X be any member of G. Can I move to the next one? Yes, ma'am. So if your X is member of G, G क्या है? It is arbitrary union of G alphas. अगर X इनकी यूनियन में है, so this implies X किसी ना किसी एक G अल्फा में होगा for some alpha. Sorry. Is it clear? If X is a member of G, where G is the union of all G alphas, then clearly X be member of any G alpha for some alpha. Might be G alpha 1, G alpha 2, किसी दो में हो, but at least one में तो होगा ही होगा. Say it is alpha naught. तो alpha naught ले लेते हैं हम इसको. Let's suppose it is alpha naught. And what is given to us? Given that G alpha naught is an open set. ये तो हमें गिवन है कि सारे के सारी कलेक्शन जो है वो ओपन सेट्स की है. All these GIs are open, right? So it means this G alpha naught is an open set. That is, there exists an open sphere S with radius R around the point X such that your X is belonging to this open sphere and this is completely contained in G alpha naught. अगर ये G alpha naught में contained हो रहा है, it means it is contained in the union of G alphas, and which is G. Is this point clear? Since this is an open set, so by definition, there should exist any open sphere which is having this element and it is completely contained in G alpha naught. But G alpha naught इन्हीं में से कोई एक था, तो इसका मतलब इनकी यूनियन में भी आ गया. So this implies we have an open sphere in G also. So this implies G is a neighborhood of X. But X is any arbitrary point. So this implies G is a neighborhood of each of its point. Which implies that G is an open set.